एनीवेज वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 मैथ्स का। ये इस चैप्टर में से कुछ भी रिलेटेड पोर्शन नहीं है, सारा चैप्टर आपको करना है, बट बहुत इजी चैप्टर है। लाइक थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा लेंथी जरूर है, लाइक इट विल नॉट बी लाइक हाफ एन आवर वीडियो, बट हाँ चैप्टर में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। एक तो आपको दो तीन चीजें आपको करनी है। आपको दो चीज अंडरस्टैंड करनी है, रूट्स निकालना। हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं इक्वेशन की, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपको स्टडी करना है इसके अंदर। फिर हमारे रूट्स जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। रूट्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल टू जीरो होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, या फिर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? तो वो चीज हमें स्टडी करनी है, रूट्स के बारे में स्टडी करना है, राइट? सो आपको डी की वैल्यू स्टडी करनी है किसमें। एंड थर्ड थिंग दैट यू नीड टू स्टडी एंड हाउ टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है आपको वो स्टडी करना है। तीन चीजें आपको सीखनी है इस चैप्टर में। अगर ये तीन चीजें आपको आ गई इस चैप्टर में, और फोर्थ चीज आपको कुछ भी नहीं करनी है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। सो सबसे पहली चीज, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं यार, लाइक नॉट दैट बिग डील, राइट? आपने नहीं पहले देखा, नहीं पहले पढ़ा तो नॉट अ बिग डील, हम लोग अब देख लेते हैं इसको। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक व्हेन द इक्वेशन इज देयर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? इस फॉर्म में आपकी कोई भी इक्वेशन होगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक मीन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी, टू होगी, राइट? For example, if I just write an equation like 2x square plus 3, right? So that is your quadratic equation because यहाँ पर highest power 3 है। अब मैम आप बोलोगे मैम इसमें x वाली टर्म तो है नहीं, तो अगर आप मैं इसको इलेबोरेट करूं तो ये होगी 2x square plus 0x plus 3, right? So actually the value of b is 0 here, right? So first of all आपको अगर x to the power 2 की फॉर्म में आपकी इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी, राइट? इससे बड़ी वाली नहीं होगी, क्यूबिक नहीं चाहिए हमें, राइट? हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, थ्री टाइप की इक्वेशन होती है, मैं आपको उसका भी ब्रीफ दे देती हूँ। द फर्स्ट इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दैट वी स्टडीड इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन दैट वी स्टडीड इज अ क्यूबिक इक्वेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन क्या है? जहां पर आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्स प्लस 3, right? That is a linear equation. When your highest power become 2, right? That is a quadratic equation. When your highest power becomes 3, right? So that equation will be anything like highest power is 3, बाकी आप कुछ भी ले लो. So that is your cubic equation. There are three types of equations. So here in this chapter, we are just going to study about the quadratic equation. So चलो let's get started. और हमेशा ना पढ़ते टाइम एनर्जी रखा करो कि yes I have to do it. So चीजें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। या अगर आप कोई भी कहीं पर भी कुछ भी डाउट फील हो रहा है, do ask me. I'll just answer the same things in the chat box. So yes, so let's get started with this. Let's see. The first exercise, the first question of the exercise, that is exercise 4.1 आपका, जिसके आपको अंदर को चेक करना है that this equation is quadratic or not. So this is very simple thing. If you get the equation in this form, you get the equation in ax square plus bx plus c form, so that equation will be quadratic. Simple easy thing है, right? So let's first open this. So this is a plus b whole square, so that will be a square plus 2ab plus b square. So at another hand, the side will be like 2 into x, that is 2x. 2 into 3, that is 6. So 2x minus 6. So यहाँ से देखो 2x और 2x cancel out हो गया. So it will be x square plus 1 plus 6 into 0, that is x square plus 7 equals to 0. Right? So you see, now this is my quadratic equation. This is quadratic क्योंकि यहाँ पे देखो, this is actually in the form of this, right? So अगर मैं इसको elaborate करूँ, it will be like x square plus 0x plus 7 is equal to, right? So this is a quadratic equation, right? So now let's move on to one more question, another question also. So see, in this one, it is x square minus 2x, and I'll do this. So minus 2 into 3, that will be minus 6, minus minus plus, that is x. So it will turn out to be 2x, right? So देखो, यहाँ पर x square minus 2x, और यहाँ पर हो गया minus 6, minus minus plus, right? तो ठीक है, ठीक चल। इसको एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमारा -2x है इसको हम लोग उधर ले जाते हैं।
So you get plus 6 minus 2x equals to 0. So x square minus 4x plus 6 equal to 0. ये इक्वेशन भी क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपके पास ये सारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास. Let's move on to third question. Let's see this is a quadratic equation or not. So let's get started and let's solve it. So the question you're having is x minus 2. This is the question. So let's solve it. So first let's multiply x with this x. So x into x is x square. Now x into 1, that is x again. Minus 2 into x, that is minus 2x. 2 into 1, that is minus 2. So then x into x again, that is x square. X into 3, that will be 3x. Minus 1 into x, that is minus x. Minus 1 into 3, that is minus 3, right? So this is how it works. So let's get started. So if I just solve it, so x square will be cancelled out with this x square. Now this will turn out to be x minus 2x, that will be x minus 2, right? Now 3x minus x, that will be 2x minus 3. So now let's get started. Now here, if you see like, now it's actually very easy to notice this here only, because see, if we just see this question, now your x square term is actually not here. For this, if I just see this equation, it will be linear equation. So x square वाली term तो है नहीं, highest power 2 है नहीं, so this question is actually not a quadratic equation. So सब सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना. अगर आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसमें है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. दिस इज व्हाट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो इसमें सबको आपको ये करना, चेक करो अगर सॉल्व करके क्वाड्रेटिक है. अगर आपको एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बचता है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Represent the following situation in the form of quadratic equation. Now you have to make the quadratic equation and you have given the question. You have to make the quadratic equation. This is your task. Okay, the area of the rectangular plot is this, right? Area is length into width. Length of the plot is 1 more than twice of the width. Okay, so let's take let the width be x, right? Width be x meter. X meter hai. So my length will be what? So my length be more than 1 more than, right? So it will be 1 more than twice. 1 more than twice. So it will be this much. Now you know that length multiply width is what? That is area. So if I just do it, so it is 2x plus 1 and here it will be x. So it will be equals to area 528. So now let's solve it further. So this will turn out to be x into x, that will be 2x square plus x. And यहाँ पर ये आ गया 528. So this is the quadratic equation, right? So easy. So this is what you need to do, quadratic equation form way. So that's what you need to do, right? Let's move on to next question. So the product of two consecutive positive integers. What are the consecutive numbers? When we talk about the consecutive, no. Consecutive मतलब एक के बाद एक. मान लो अगर मेरा फर्स्ट नंबर 2 है, अगला नंबर 3 होगा, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 11 होगा. Consecutive, बिल्कुल साथ वाले, right? Consecutive. So what they are saying, the product two consecutive positive integers. Product of the consecutive integer. So let me take, let one integer be. So my one integer be x, right? Other integer be, sorry. So other integer be what? X plus 1, right? Now the product of two consecutive integers. So if I just multiply this x with this x plus 1, what I'm going to get? I'm going to get 306, right? So this is what you get. So if you solve it, that will be x square plus x. And if I bring it here, so that will be 306, right? This is the quadratic equation. Okay, now let's move on to another question. So it says that Rohan's mother is 26 years older than him. So the product of age after 3 years. Okay, so first let's take Rohan's mom is 26 years older than him. So let's take the, let's Rohan's age be x, right? So my Rohan's age be x, right? So my Rohan's age be x. So Rohan's mom's age will be what? So Rohan's mother's age, right? That will be 26 years more, right? 26 plus x.
That's done. The product of their ages, right? So product of their age is x and 26 plus x, this, right? But they are not talking about this. They are actually talking about 3 years from now. So if I talk about 3 years from now, so definitely Rohan will be 3 year bigger, right? और उसकी mother भी क्या हो जाएगी after 3 year? He also will be 3 year younger, and that will be 360. This is what question says. Now let's move on. There's x plus 3, and here it is 26, 29 plus x, and that is 360, right? So 29 x, and that will be x into x, that is x square. 29 multiply 3. So what it become 29 multiply 3 if I do? So that will be 29 multiply 3, 30 multiply 3, 90, 90, that will be 87, right? 87 plus 3x. So it is 360. Now let's solve it. So it is x square. So 29 plus 3, that will be 32. So 32, yeah, that will be 32, right? 32x. And if I just solve it, so ये मेरा हो जाएगा plus 87 minus 360 here. So the final answer I get, that is x square plus 3x minus 273 equals to, this is my quadratic equation form. Right. So now let's move on to next question. It says that a train travels a distance of 480 at uniform speed. If the speed of this is this in the, you have to find the, we need to find the speed of the train. So let's take the speed of the train be x. So let me take the speed of the train be x. आपको क्या x लेना है वो आपको ये देखो लास्ट स्टेटमेंट बता रही है. So let speed of the train be x. Speed of train be x, right? So distance is this, right? So time taken कितना हो जाएगा? So my time taken will be, so speed is equal to distance upon time, right? So time कितना हो जाएगा? That will be distance upon speed. So my distance is 480 and time it took, that is, right, that is right. Time is equal to, that is this into speed, right? So that will be x, right? If the speed has been 8 kilometer less, then the time will be 3 years, 3 more, right? So if I just take it, अगर मैं इसको लूं, so मेरा जो time है, that will be increased by what? Now, second situation is speed is 8 kilometer per hour less. So if my the speed is 8 less, right? That is 8 less kilometer per hour. So my time taken will be what? So my time taken will be 3 hours less, 3 hours more, right? 3 hours more. So that will be 3 hours more, correct? So now you need to find out, and it covers the same distance. Now it covers the same distance. See what it is saying? So distance is still what? That is 480. That is 480. So distance is equal to, अगर हम देखें, so simple सी चीज है यहाँ पर. Let me move it bit down. So distance is equal to what? So my distance is equal to speed multiply time. So speed is this. So my time will be this, right? And the distance is 480. If I just solve it further, so what I get? So that will be 480. So x minus 8. And on the other hand, what will I have? I will have x 480 plus 3x. So now if I just solve it further, so it will be 480x, x minus 8, 480 plus 3x. So multiply this inside. So it will be 480x plus 3x square. Now if I multiply this and this, so it will be what? Right now it is 8024, so it will be 24x, right? So let's solve it. So यहाँ पर देखो ये तो डायरेक्ट 480, यहाँ से डायरेक्ट वहां चला जाएगा, ये हो गया 0, इसको हमने भेज दिया वहां, सब्ट्रैक्ट हो गया जाकर.
और यहाँ बचा हमारे पास 3x² माइनस 24x माइनस 3840. This is your quadratic equation form. If you want to divide it, if you want to keep it like this only, that's not a problem. But if you want to simplify it, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो. यहाँ पर तो 0 है ही, तो यहाँ हो जाएगा x², 3 8 = 24, यहाँ हो गया 8, और इसको क्या 3 3 2 6, 3 8 24, राइट. सो ये हो गया, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So this is all about your first exercise. Second exercise पे चलते हैं अब हम. So let's get started with exercise 4.2. So 4.2 के अंदर हमने क्या करना है? You have to find the roots of the quadratic equation. Now the quadratic equation is given to you और आपको क्या करना है? उसके roots find करना है. So how you can actually find the roots of this quadratic equation? So let's get started with this. So find the roots of the quadratic equation by factorization. Now you have to, you already studied factorization. हमने जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 करें तो उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन स्टडी किया था. हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और हम लोग फैक्टर्स उसके फाइंड करते हैं. सो जीरोस फाइंड करना या फिर रूट्स फाइंड करना, नो, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट. जीरोस ऑफ द जीरोस एंड रूट्स, राइट. सो आई टोल्ड यू इन दैट चैप्टर. नो प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं आता है नो प्रॉब्लम, यहाँ लोग दोबारा कर लेते हैं. सो x² माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0. सो हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट दिस? So that is super easy. So just take it. So x² माइनस 3x, यहाँ पर हमें 3x जगह पर क्या लिखना है? जहां पर 3x है वहां पर सिर्फ एक हम लोग ब्रैकेट बना देंगे, so that it will become easy for you. Now जो आपका बाहर साइन है, just put it here inside. Now you need two numbers. Now you need two values here. So जिनको मल्टीप्लाई करके आए 10 1s are 10, जिनको मल्टीप्लाई करके आए 10 और सब्ट्रैक्ट करके आए 3. So आप क्या वैल्यू ऐसे ले सकते हो? मल्टीप्लाई करके आए 10 और आपको सब्ट्रैक्ट करके मिले 3. So simple, that is 5 2s. So I can take 5x minus 2x. So ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हो गया, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. So now it is x² minus plus minus. Oh, sorry, no need. I don't need to solve it, otherwise वापस से वही आ जाएगा. So let's take it common now. So x common लिया हमने, तो यहाँ पर we get x minus 5. And on the other hand, you see that 2x minus 10. So यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? That is 2. So x minus 5 ये यहाँ हमारे पर आ गया. यहाँ पर अब let's have a look on this these two terms. So यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है. So x minus 5, x minus 5. तो ये हमारे पास क्या आ गया? x minus 5 हमने यहाँ ले लिया कॉमन. So इस टर्म में मेरे पास बच गया x और इस टर्म में मेरे पास क्या बच गया? 2. So that is what I get, right? So this is the root of this quadratic equation. Let's move on. So next question पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? रूट फाइंड करना है. दैट इज सुपर डुपर इजी. नाउ अब देखो 2x², जहां पर x है वहां पर क्या करा हमने? ब्रैकेट लिया, बाकी एज इट इज. पुट दिस साइन हियर. 6 2 12, मल्टीप्लाई करके आए 12 और माइनस करके आए 1. सो जस्ट थिंक ऑफ सच वैल्यू जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आए 12 और माइनस करने से आए 1. So just think of it. So multiply करके मेरे पास आया, so 4 3s are right. So I get 4x 3x. So again if I just take it, so 2x², 4x minus 3x minus 6. अब यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज हो? बिकॉज बाहर पॉजिटिव साइन था, बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा. So now let's take 2 common. My 2 is common and x is common. So 2 और x ले लिया, यहाँ पर मेरा बच गया x और यहाँ पर 2 और x ले लिया, so यहाँ बचा 2, right? So नाउ हैव अ लुक. और यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे हम लोग और 3 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 यहाँ पर बच गया. अब इन दोनों टर्म में देखो, x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है. सो कॉमन क्या आ गया? x प्लस 2 आ गया कॉमन, राइट. सो यहाँ पे हो गया ये 2x माइनस 3. अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप देखो ऐसे समझा करो इसको. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x² था और 4x² था. हाउ आई टुक कॉमन? 2x² देखो किस किस से मिलकर बना है? 2 से, x से और एक x से. और 4 किस किस से मिलकर बना? दैट इज 2 से और x से. नाउ यू सिंपली थिंक इट एज, देखो यहाँ पर 2 और x, so 2x कॉमन था. अगर 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? x बचा और यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा. तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कॉमन लेने में. अब जैसे मैंने इसमें से कॉमन लिया था, इसमें से कॉमन लिया था. सो दिस इज माइनस 3x एंड इट इज एक्चुअली 2 into 3, राइट. सो क्या है? 2.3 नहीं, 2 into 3 है, ये into है, मल्टीप्लाई का साइन, राइट. इसको डॉट मत समझ लेना, right? That is your multiply. So now you think that negative negative, right? You have that common. और देखो यहाँ पर 3 और 3 है, so नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर x बचा, साइन तो नेगेटिव का हमने ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन बचा. तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टेक कॉमन. ओके,
So let's see another question. So another question is 2x square plus 7x plus 5 root 2. So इसको सॉल्व करते हैं. 2x square. आप देखो थोड़ा सा आपको देखने में ट्रिकी लग रहा होगा ये, बट है नहीं. लेट मी हेल्प यू आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस और दिस, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो 5 रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 10, राइट. रूट टू क्या हो गया 2. सो 5 इंटू 2 दैट इज 10, राइट. सो 10 मल्टीप्लाई करने से आए 10 और ऐड करने से आए 7. आई नीड टू सच नंबर्स. इनको मल्टीप्लाई करूं तो आए 10 और मैं ऐड करूं तो क्या आए 7 आए. सो हाउ इट एक्चुअली वर्क. सो जस्ट हैव अ लुक. सो 5 2 10, राइट. 5 और 2 क्या क्या बन रही है. सो आप देखो 5 प्लस 2 नो 2 प्लस 5 ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन. आप देखो अगर मैं 5 प्लस 2 ले लूं कॉमन लेने में प्रॉब्लम आएगी. सो हम लेते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर लेते हैं 5, राइट. सो आ गया 7x आएगा. So root 2x square as it is 2x 5x 5 root 2 equals to 0. So अब देखो यहाँ पर क्या है रूट 2 x और x और यहाँ पर 2 किससे मिलकर बना है. अब 2 किससे मिलकर बना है रूट टू और x. So रूट 2 और x कॉमन है. सो आई कैन टेक रूट 2 x कॉमन. सो यहाँ पर रूट 2 x कॉमन लिया. यहाँ पर क्या आ गया x और यहाँ पर आई हैव रूट 2. There's just root 2 remaining, right? So if I take root 2 common, so यहाँ पर root 2 बचा remaining में. Now if I just take this, see this. So now have a look, 5 and it's 5. So it's I can take this 5x plus root 2. Always remember one thing. If you are facing problem here in like taking common, no, always remember जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास बच रहा है वही आपके पास यहाँ पर बचना चाहिए. ऑलवेज रिमेम्बर बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमें वापस से उसको कॉमन लेना होता है. तो हमेशा याद रखना यहाँ पर ही दोनों चीजें सेम आएंगी आपके पास. तो x प्लस रूट 2 हमने फिर से लिया कॉमन. तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास फर्स्ट टर्म बची रूट 2 x और यहाँ पर बचा 5. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो राइट. हाँ अगर आपको इसके फर्दर मैंने आपको रूट्स भी निकालने हैं तो वो भी आप ऐसे निकाल सकते हो. तो यू कैन जस्ट टेक लेट मी टेक दिस, राइट. सो यहाँ पर एक कॉमन तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई और x प्लस 2 इक्वल्स 0 है. सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई. सो ये आपके रूट्स भी मैंने निकाल दिए, राइट. सेम इसको भी इक्वल्स 0 पुट करो. तो यहाँ से आपकी रूट की वैल्यू कितनी आएगी -2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 3/2. सो हाउ इट वर्क्स. और यहाँ से भी देखो अब माई x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब why it's actually working here again. My two terms, I'm multiplying the two terms and it is becoming 0. What it means, like if I multiply two terms and it is becoming 0 means either the first one is 0 or second one is 0. तभी आंसर 0 हो सकता है. किसी भी और नंबर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो तभी 0 आएगा अगर दोनों में से कोई एक 0 है. सो लेट्स से कि अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी रूट 2 -√2. और लेट्स से कि अगर दूसरा वाला 0 है सो आपकी रूट 2 x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. सो रूट 2 x कितना हो गया दैट इज -5. सो x कितना हो गया -5/. This is how it is, right? Let's move on to next question. That is 2x square minus x plus 1/8x. So now it is actually not good. So let's see. Let's multiply this equation by 8. So multiply karte hain 8 se. That will be 16x square minus 8x plus 1 equals to 0. अब मल्टीप्लाई करूं दो नंबर्स को आए 16 1 जा 16 और प्लस करूं तो क्या आए. दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर प्लस करूं तो क्या आए 8 आए. And rest of the equation is as it is, right? So if I take like 4 4 is 16, right? So I can take it as 4x and 4x. So this is how it works. So now let me open the bracket. So it is 4x 16x square minus 4x and the other one is also minus 4x plus 1 equals to 0. So and now I can take 16. 16 is made up of 4 4s are 4 4s are and 4 4 और x x चार चीजें हैं 16 के अंदर. चार चीजें हैं 16 के पास. 16 के पास क्या क्या है let me just write it here. So 16 के पास 4 है x है और x है, राइट. सो यहाँ पर 4 और x है. सो आई कैन टेक सिंपल 4x कॉमन दोनों के पास है. सो यहाँ पर एक 4x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है. सो आई कैन टेक 1 कॉमन, राइट. वाई आई टेक -1 कॉमन बिकॉज आई वांट द सेम साइन. आई टोल्ड यू कि ये दोनों चीजें जो होती हैं सेम होती हैं. अगर मैं उसको प्लस कॉमन ले लूं तो वो आ जाएगा -4x प्लस 1. मुझे नहीं चाहिए, राइट. सो आई विल टेक माइनस कॉमन ताकि मुझे यहाँ पर जो चीज मिले ना वो मुझे सेम मिले. यहाँ पर साइन अब वापस ओपन करोगे तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, राइट. So now I take 4x minus 1 and here also I have 4x minus 1 equals to 0. So 4x minus 1 equals to 0. So that will turn out to be 1/4. X की वैल्यू 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4. So this is how it is working, right? Next question.
10x, 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. So let's move on to this question also. So 10x, 100x square. So 100x square और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट पुट करेंगे, यहाँ पर 0, ये वाला साइन बीच में, मल्टीप्लाई करो तो आई 10, प्लस करो तो आई 20, 10 10 100 एंड सॉरी मल्टीप्लाई करो तो आई 100, राइट? 10 10 20 और 10 मेरे पास आ गया, दैट इज 20. सो प्रॉब्लम सॉल्व. सो ये दिस इज 100x square minus 10x minus 10x plus 1 equals to 0. Now I can take this 10, also have 10, 10x x, so I can take 10x common, so I have to 10x minus 1. So nothing common again like the previous question. So 10x minus 1 again. So now I can take 10x minus 1. And here also I have 10x minus 1. So right, let's take it. So 10x minus 1 equals to 0. So x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 upon 10. Same यहाँ सॉल्व करेंगे, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 upon 10. So this question actually have equal roots. So these are the roots of the equation. Let's move on to next question. So next questions जो है वो आपके उनके अंदर क्या है, आपको देखो, solve the problems given in examples 1. Example 1. So आपको रूट्स फाइंड करने हैं. सो रूट्स आपको आते हैं फाइंड करने, आई थिंक होपफुली आपको आ गए होंगे, नहीं आ गए होंगे तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन जस्ट डू इट अगेन. So now let's move on to next question. The next question that you have, find the two number whose sum is 27 and product is 182. So sum is 27. Now sum is 27. So let's see what is the sum. Sum is 27. Product two numbers. So one number is x. So other number will be what? Both have sum 27. So एक number x दूसरा कितना हो गया, 27 minus x, right? और फिर उनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कितना है, x और 27 minus x का जो प्रोडक्ट है दैट इज 182. So you have to find the two numbers. So first let's make the quadratic equation. So that will be 27x minus x square 182. So let me bring 182 here. So minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0. So let me just simplify this equation. पूरी equation को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे. x square minus 27x plus 182 is equal to 0. Now simple thing, right? What you have to do, मल्टीप्लाई करने से आए 182, right? मल्टीप्लाई करने से क्या मिले, 182, और प्लस करने से मिले 27. आई नीड सच नंबर्स. अगर नंबर बड़ा हो और आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसको सॉल्व करने में, सो नो नीड टू वरी, जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करो 182 का. तो 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, देखते क्या आता है, राइट? सो लेट्स डू. 2 9 18, 2 1 1, 2 1 2. सो 13 टेबल अगर आपको पता हो, 13 7 91 और 7 1. सो इनके कॉम्बिनेशन बना के देखो जरा. 26 और 7 नहीं बन रहा, 27. सो 13, राइट? अब देखो, ये देखो 14 14 और 13 और उनका कॉम्बिनेशन क्या है, 14 और 13, मतलब 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो क्या आएगा, 182, राइट? सो अगर मैं इसको 14 लिख लूं, 14 मल्टीप्लाई 13 कर लूं तो क्या आएगा, 182. और अगर मैं यहाँ पर 14x और 13x ले लूं तब भी क्या आएगा, 127 आएगा, और मल्टीप्लाई करके आएगा 182 अगेन, राइट? सो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x. सो ये नॉट प्लस एक्चुअली बिकॉज साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर भी. So you have minus 13x plus 182 equals to 0. So I take x common, x minus 14 here. Now I take x common again and 13 common also, right? So 182 is made up of 13 and 14. You already know now. Now x minus 14 again here. So if I take common from both here, so x minus 14 is common. And here you have x minus 13. So your roots of this equation is either x equals to 14 or x equals to 13. This is how it's working, right? Let's move on to next question. Again, two consecutive positive integers and whose sum of squares is 136. Positive one integer will be x, right? And other integer will be consecutive, so that will be x plus 1.
सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मींस x का स्क्वायर और x plus 1 ka square, that will be 365, right? So let's solve it. So a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, that is 365. So xx, that is 2x square. So 1 plus 2x, यहाँ इसको ले आते हैं 365 को. Let's solve it further. So 2x square plus 2x minus 364, right, is equal to 0. सो सॉल्व इट फर्दर. सो इसको 4 से, इसको 2 से डिवाइड कर दे, थोड़ा सा एक छोटी इक्वेशन हो जाएगी, सॉल्व करने में इजी रहता है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 1 if I take 8 is 16 to 182, right? Okay, now again आप देखो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना. एक्स स्क्वायर, आप देखो, माइनस करूं तो आई 1, मल्टीप्लाई करूं तो आई 180. अगर आप अभी हमने क्वेश्चन किया 13 और 14, 182 के अगर हम फैक्टर्स करें, देखो ऊपर हम अगर फैक्टर्स देखें, सो 182 के फैक्टर्स अगर हम करें तो ऊपर देखो क्या आ रहा, 13 और 14, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व. सो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, सो दैट इज 13 एंड 14. I'll take not 13 14 because I take 1, I will take minus 1, so I'll take 14 13, राइट, बिकॉज देखो मुझे नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए था, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आप इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says that the altitude of the right angle triangle is this and the base is this less than this and hypotenuse is 13. Okay, so altitude is 7 less than base. So base है एक right angle triangle है, right? इसका base क्या है, x. एल्टीट्यूड क्या है, 7 लेस, मतलब x से 7 लेस, लग नहीं रहा 7 पर वो 7 लेस है. हाइपोटेनस क्या है, 13 है. आप देखो, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. व्हाई इट्स एक्चुअली वर्किंग, बिकॉज सम ऑफ बोथ साइड्स, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट दिस x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दोगे इक्वेशन आ जाएगी और उसके बाद हम उसके जीरोस इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यस, yep, there is one last question of this exercise. So that is, the cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. So it was observed that the particular day the cost of production of each article is 3 more than twice of the article produced in that day. So मतलब अगर वो x आर्टिकल बना रहे हैं, राइट, तो कितने आर्टिकल बना रहे हैं, लेट जो आर्टिकल बना रहे हैं वो कितने बना रहे हैं. सो आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स, राइट. सो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स. अगर वो x आर्टिकल बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस, राइट. इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन द डे. सो 3 मोर देन ट्वाइस. सो cost of production will be what? So let's move on to this. So cost of production is 3 more than twice. So it is 3 more than twice. So it is 3 more than twice and 3 more than that, right? आप देखो, मान लो अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है डे की, 90. अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अगर कोई भी चीज, इफ आई एम जस्ट मेकिंग दिस पेन, राइट, अब ये पेन, मान लो इस पेन को बनाने में लग रहे हैं 6 रुपीज, राइट. 6 रुपीज मुझे लग रहे हैं इस पेन को बनाने, और मैंने दिन के कितने पेन बनाए, मैंने दिन में 4 पेन बनाए. तो 6, मुझे कितने पैसे मेरे लगे, 6 एक पेन के, 6 4 बार, राइट. सो इट विल बी 6 times 4. सो व्हाट आई एम डूइंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो 6 पेन मैंने बनाए, राइट, 6 सो इट विल बी 4 times 6, राइट, 4 times 6. सो क्या हो रहा है, तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट कितनी होगी, सो टोटल कॉस्ट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो ये कितना हो जाएगा,
ऑलराइट, सो अब देखो जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, दैट विल बी, इफ आई जस्ट डू इट, सो ये कितना होगा, दैट विल बी एक्स इंटू 2x+3 एंड दैट्स इक्वल टू 90, राइट। सो यही चीज आपको इसको इसमें अंडरस्टैंड करनी थी। अगर मैंने दिन के 4 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल के 6 रुपए हैं, तो मेरे टोटल दिन में कितने हो गए, 24 रुपीज मेरे लग गए, राइट। सो अगर ये होगा, सो लेट्स सॉल्व इट, सो ये हो जाएगा 2x² + 3x इक्वल्स टू 90। इफ आई सॉल्व इट फर्दर, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 2x² + 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो मल्टीप्लाई करके आए, अब क्या है, मल्टीप्लाई करके 180, सो 90 टू द 180 मल्टीप्लाई करके आए 180, और सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिले 3, राइट। सो 180 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पे, सो 290, 245, 5 9 × 45, 3 3 अब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखो जरा क्या बन रहा है। सो 3 to the 6, 6 6 6 एंड 6 36 नाउ 3 चाहिए मुझे। सो 15, 15, और यहाँ पर कितना बन गया, 2 to the 4, 4 to the 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से फर्दर। सो 2x² + 15x माइनस 12x 90 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 2x + 15, राइट। और यहाँ पर देखो, अब 12 देखो, अगर हम लोग 12 देखें, लेट मी इरेज इट। देखो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे तो 12 किस किस चीज से मिलकर बना है, 12 बना है 3, 4 और x, राइट। और 90, 90 मेरा ये सारे नंबर से मिलकर 2533, राइट। Yeah, 4 is not directly 4, that is 2 and 2. So now I think that 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, I can take 2 common, और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, so I can take 3 common, so I can take 2 3s are 6, I can take 6 common, so if I take 6 common, so यहाँ मेरे पास क्या बचा, 2x, और यहाँ से हमने 2 और 3 ले लिया, बिकॉज 90 क्या है, एक्चुअली 90 है ना, 2 × 3 × 3 × 5, राइट। सो मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, सो मेरे पास क्या बचा, 15 बचा। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2x माइनस, नेगेटिव भी कॉमन लिया हमने, 2x + 15 इज हेयर, और यहाँ पर बचा x माइनस 6x, इट इज इक्वल टू 0। सो इफ यू जस्ट सॉल्व इट, x to x, maths is all about practice, the more you practice the better you can actually do the things, right। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है किसी चीज, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई तो उस चीज को आप इजिली कर सकते हो, राइट। सो ये क्या कितना हो गया, -15, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -15/2। और यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, सो इट इज x माइनस 6x, तो इट इज नॉट एक्चुअली 6x, इट शुड बी 6 राइट हियर। सो x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप कितने आर्टिकल्स बना रहे हो, आप दिन में 4 आर्टिकल बना रहे हो, 5 आर्टिकल बना रहे हो, 6 आर्टिकल बना रहे हो, बट आप दिन में -15/2 नहीं बना सकते, तो इसकी जो -15/2 होगी, नॉट पॉसिबल वैल्यू है। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू -15/2 इज नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज प्रोडक्शन कांट बी नेगेटिव, राइट, प्रोडक्शन कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 6, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज।